प्रपोज क्या करने की जरूरत है? आधे लोग तो शायद डरते होंगे कि इतने हसीन हो, तो जब हसीना सामने आती तो आदमी वैसे ही डर जाता है। Be a double. I need someone. तो आप साथ में आ जाना हमारे। Hello, I'll be a kebab. I also need someone like. जाना चाहता हूँ आपके साथ, एक ड्रिंक पीना चाहता हूँ। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तुम सेफ महसूस कर रहे हो मेरे साथ। भाई ये जो चीज़ है ये सब लोग के पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि लोग छुपा के क्यों रखते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा ओपन तरीके से बात करता हूँ। आई हैव स्पोकन टू माई मॉम अबाउट इट, डैड अबाउट इट। पहले मेरे डैड ने मुझे बोला कि मैं एक फटाक से लाफा मारूंगा, लेकिन देन ही रियलाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट किड्स आर बीइंग स्पोकन टू ऑन दिस नोट। वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ लास्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड लास्ट स्टोरी का स्टोरी बताने के लिए आई हैव विद मी द लवली टीम ओवर हियर एज वेल फॉर लास्ट स्टोरीज 2, डबल द धमाका, डबल द एंटरटेनमेंट। First of all, a big clap. I think anything that comes up with a season 2, it means first season hit हुआ है, अच्छा लगा है लोगों को, which is why you're coming up with the second part. Yeah. Fantastic. I started the introduction on this note that मेरे फादर ने तो मजाक में बोला कि मेरे पापा ने बोला कि मेरे को झापर मारेंगे. But unfortunately, if I talk about Indian scenario, it is वो इसको दबा के रखते हैं हम लोग. We don't as parents, मैं parent तो हूँ नहीं, लेकिन I can say from a child's perspective, 90% सर अगर मैं फैमिलीज के बारे में बात करूँ तो दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एट अ टाइम व्हेन परहैप्स द चिल्ड्रन शुड बी लर्निंग अबाउट इट. Correct. तो उनका इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से आता है, कुछ गलत होता है, वट एवर द अदर सोर्सेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू डिस्कस when stories like this come out as responsible public figures as well. आप लोग ये जिम्मेदारी लेते हो apart from the acting part कि नहीं चलो मतलब I should do my bit, I should do the entertainment part as well, but apart from that मैं सही तरीके से लोगों को educate भी करूँ. Do you look at it like in this perspective, या फिर just the acting part is enough to take care of it? मेरे लिए इस फिल्म का कोई मैसेज होना बहुत जरूरी होता है. जी मैम. प्ले हो, फिल्म हो, जी. बहुत जरूरी होता है. आई बिलीव इन इट. जी. और जो चीज़ बहुत कड़वी हो या गलत मैसेज दे रही हो वो मैं नहीं करूँगी. Sir, for you? No, it's important. I just feel there is a certain responsibility you have towards the people who watch your work. And I feel that to connect, to educate them through your work is also a great thing. Correct. And there's been a reason why we are also part of Yes. Made for Each Other. Is because, and also why we are cast Yes. as characters, as the Dadi, as Veda, as Arjun. I just feel that through this, if we can enlighten the people of this country and others, I think even in whatever little way. Yes. Because this is a little bit, we are very Bombay, Delhi, Bangalore, Calcutta people, right? Correct, correct. लेकिन City वाला vibe है. हाँ, लेकिन हिंदुस्तान कुछ और है. तो Correct. वहाँ तक पेनिट्रेशन होना या वहाँ तक पहुँचना, शायद अगर यहाँ से डायलॉग शुरू होगा कुछ सालों में जाके लगेगा. फैलेगा फिर. सो वो ही एंडेवर रहता है. नेटफ्लिक्स की लैंग्वेज में 3 tier नहीं होना चाहिए, 1 tier तक. अरे ये 5-6 tier भी हो जाएगा मैम. आई होप दैट प्रे इन दैट वे. व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? Look, there are two ways to look at it. एक आपको किसी ऐसे source से पता चले where you would start hating it. Yeah. Or you get to know from people you love where they explain it in a much nicer way. And then you accept it and you don't look down upon it. So I want to make sure that I want to be a part of a movie where it starts a conversation. Yeah. At least amongst the family. Then I'm talking about the country. And वो एक घर में दूसरे like सबसे पहले important मेरे घर में होना बहुत ज़रूरी है. Then only I'll be able to. That's when it will reflect it on my in my performance on screen. So there were times where I was growing up and I was introduced to certain things at certain age, at the right age I must say, in a very nice way. Yeah. But when I had my friends express their feelings when they were introduced to those things at that point of time was not really nice. So they are like, "Chi, गलत बात है. yeah, उनके लिए. galat, no, what?" Yeah. So but these are the same people who today tell me that I wish I was introduced to this thing the way you were introduced to. So it's a very beautiful story by R. Balki sir, and the beautiful bond between not just the grandmother and the granddaughter, but Veda and Arjun, about what her expectations are to my relationship with my mom and her relationship with the father. जी. And as kids,
you're not used to seeing your mom and dad getting cozy, holding hands. Oh, yes. You know, especially in India. जब मैं खुद Stockholm travel कर रही थी, and when I saw my friends' parents kissing each other, I got a culture shock. I jumped out of that chair when I was eating dinner. But then I realized that that's, you know, normal. उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग Expression है. of love, right. But कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही है थोड़ी बहुत, and people are more, they're comfortable expressing. And let's not point fingers at those who are comfortable expressing their love. Fair enough. If they are comfortable, why are you? Either you don't have that chemistry with your partner, clearly, जलन. or you're jealous. चलन, हाँ. और कुछ तो missing है, कुछ तो हाँ, और गड़बड़ है. कुछ तो missing है. So I think through this film, my agenda was to वो कहते हैं ना progressive. हाँ ठीक है, progressive. Yeah. But क्या वो रिश्ता उस लड़की का उसके माँ से, उसके पापा से या दादी से या होने वाले हस्बैंड से किसी हद तक बेटर हो सकता है, और अगर होना भी चाहिए, and that conversation is something that I felt extremely endearing and beautiful. That phase before marriage is very, very beautiful. And you have to be 100% sure that the man who's not just financially stable is compatible as well. Absolutely. Yeah. जितने भी मृणाल के दोस्त थे जो लोग बोल रहे थे कि इश वो पूरा दुनिया उसी से चलता है, that is the cycle of life, so you can't do that. वैसे ही होता है, ठीक है? I have to compliment Neena ma'am's look specially. I think she's looking the youngest of the lot over here. मैं genuinely बोल रहा हूँ आपको. Tough compliment. I met you the last. क्या बात है? दिल जीत लिया हमने. Now I have to tell you, the last time was that I met you was during the interviews with Anupam sir and Boman sir as well. वहाँ पे तो एक अलग जलवा था, यहाँ पे अलग जलवा, and the teaser में your dialogue, it was also similar to what I said. You know, ये जो बेवाकी है, this spirit of Neena Gupta that we talk about, this is the reason why, you know, me being so younger to you, I can still talk about this subject in front of you in a very open and, you know, productive manner. It's a discussion at the end of the day. मैं शर्मा जाता. With them, it's a different thing, but I would have been shy. Nobody feels uncomfortable around you whenever it comes to any discussion. ये क्या रीजन है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पर्सन दैट यू आर. ये क्या आपको क्या लगता है कि अक्रॉस जनरेशंस आप इतने अच्छे से इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो विद एवरीवन, जो कि आप मे बी समवन ऑफ योर एज और मे बी समवन ऑफ मृणाल सच, एवरीबॉडी कैन ओपन अप टू यू. ये इसका जवाब आप लोग दो ना, मैं कैसे बताऊं कि मैं Can I tell Yeah, please. something? हाँ, they have to look, tell why they feel comfortable with me. You know, sometimes on set, जी. when you call someone sir, ma'am, you are setting a boundary for yourself. But the moment you start calling that person as the character name or as his or her name, you already, that's a one step towards your friendship. Yes. You know, with Neena ma'am, when I first met her, I have been a big fan of her on Instagram. Who isn't? And I feel like the kind of personality and the aura she has, like you come with any problem, she will always have a solution. She'll be honest with you. She'll always treat you like a child and give you the best suggestion in the world. So that little moments that I had in between the shots with her, I have learned life. And one thing I've learned from her is if you don't enjoy, then that's not the life that you live. Oh, yes. You gotta enjoy it. You gotta own your life. You have to own yourself and be aware about what is happening in the world. I could just sit with her in one room and absorb so many things. Yeah. I feel like it's so important for every woman out there to first feel confident. And that's the energy she emits. That's beautiful. So tomorrow when I have a problem, I know that Neena ma'am will always give me. क्यों देख रहे हैं? ये बहुत पर he's always like that. number one. बहुत It's good. Even यार, that shows his comfort zone as well. मैंने कुछ बोला तक नहीं है. He's very naughty. He's very very naughty. अरे लव स्टोरीज करे नॉटी तो होना पड़ेगा ना, नेचुरल बात है. मतलब वैसे नहीं. अरे यार. In every way, you know, in every way. He's notorious. Let's put it that way. Oh. Okay, jumping back to your answer, Yes. I'll conclude saying that Yes. she's the kind of person who gives that energy that if you have a problem, if you have any suggestion, any question, I will answer. She's giving. She's a giver. That's why you're not hesitant. हाँ.
Exactly, and I get that vibe as well. वो सिर्फ बात करने से नहीं, ऐसे मतलब देखने में भी समझ में आता है कि यार somebody of your age या बात कर सकते हो. Correct. That is the most Feel important. inside your age only ना. अरे यार यही तो मैम, यही तो most important चीज है. Age is just a number. You just feel what you are. Exactly. I think It's not just a number. तकलीफ होती है आजकल, गाड़ी से धीरे से उतरती है, मतलब सब कुछ धीरे हो गया है, शरीर तो बूढ़ा है, लेकिन दिल दिमाग जवान है, तो इसलिए शायद लोगों को. जवानी के नाम पे. अच्छा तू बोल ना. हाँ. Why He has to say something. हाँ. I think you're very sexy. I think you're very hot. And I think you're very desirable. Yes. यो है, तुम इसलिए कह रहे हो मेरे को खुश करने के लिए? वैसे नहीं, ऐसा मैं खुश करना. मेरे को आज तक किसी ने प्रपोज नहीं किया लाइफ में. प्रपोज क्या करने की जरूरत है? आधे लोग तो शायद डरते होंगे कि इतने I हसीन हो. swear. तो जब हसीना सामने आती तो आदमी वैसे ही डर जाता और है. ये भी सोचते होंगे कि कितने लोग होंगे कतार में, मैं कहाँ कौन से हाँ, नंबर मेरी पर कब हूँ। आई बारी? हे भगवान, तो मतलब ये हुआ अब मेरी बारी कब कि आई? डर के नहीं, मारे कोई नहीं है और मैं अकेली मेरे साथ चलोगे कॉफी पीने? एक और पॉसिबिलिटी है कि शायद मैम को इतने चाय, मिले, किसी drink को पियोगे? जेन्युइन लगा ही नहीं, which is why she doesn't even consider any of them. ड्रिंक पीऊंगी. हाँ, क्या बात है, तो कॉफी वाला डेट इज डन. ड्रिंक का डेट है, लेकिन बार पे जाए. लेकिन मेरा एक नियम है. अब बताओ. जो शादीशुदा लोग मुझे ऑफर करते हैं कॉफी चाय, उनको बीवी को बता के आना हो, जरूर बता के आऊंगा. क्योंकि मैं बड़ी Appearance आ भुगती जाएगा हूँ. नेहा मैम का. हाँ? कैमियो अपीयरेंस आ जाएगा नेहा मैम. नहीं, मैं जरूर बता के आऊंगा. मैं ये भी बोल कर आऊंगा कि मैं अकेले जा रहा हूँ. हाँ बिल्कुल, बोलना चाहिए. हाँ, क्यों नहीं बोलूंगा मैं? बिल्कुल मुझे क्या बोलना छुपाना है? चाहिए. अरे मोस्टली लोग नहीं बोलते. तो ये देखो, सब बोलकर निकला करो. All the paparazzis of Mumbai, please जो करना note, करो. a very interesting coffee meeting is going to happen on the paparazzis. नीना, of Mumbai. नीना जी and I are going on a date. Fantastic. And he's going to tell Neha about it, and I'm going to tell my husband about या it. यू प्लीज टेल योर हस्बैंड. ऐसा नहीं कि आप चोरी चोरी छुपे निकले और आप मुझे मिल रहे हो बार पे और मैंने यार, बताया. मेरे लिए भी कोई डेट ढूंढ लो. You तो must कह not रही be. हो? अगर अभी मैं Smiling अनाउंस करूं कि open में मृणाल नहीं ठाकुर आ जी जाना हैं, चाहिए. 50,000 लोग तो कितने इधर ही आ जाएंगे. आप क्या बोल रहे हो? अरे इनके साथ आई हैव टू बी अ डबल. आई नीड तो समवन. आप साथ में आ जाना हमारे. हेलो, आई विल बी अ कबाब में. आई आल्सो नीड समवन लाइक. आओगे तो We'll get a kebab for you. If I can put it that way. थैंक्स गाइस. You know, but I have to talk about Angad. You know, ये मार खाने वाला है. I, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ यार. his silence speaks 100 words. That is the power of his aura. But I have to talk. You know, good-looking man, charming man. अभी सर ऐसे हो, कॉलेज के टाइम पे तो आग लगा रहे होगे. कॉलेज के टाइम में कोई आग नहीं लगाई थी. अरे क्या बात कर रहे हो सर? It is a modesty that is talking. But I have to ask you. Not just men, even women are very open when it comes to confessing their feelings. The first girl who ever came up to you and said ki Angad, you are very hot and very desirable and I really, really want to spend some time with you. I really want to meet that girl. पहली बात, really अभी तक आज तक, and I swear It's very difficult to do. मुझे आज तक किसी लड़की ने ये नहीं बोला. ये आप ही बोल रहे हो. ये मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ आपसे. अरे 100% compliment. तो थैंक यू. आप अगर बोलोगे तो मैं What are the ब्लश कर girls जाऊंगा. doing? DM करो फटाफट. What are you guys doing? Not a single girl has, feel ना. not a single girl has said. ऐसा नहीं है कि अभी, पहले भी नहीं किसी ने बोला. डरते होंगे वो भी नीना मैम की तरह जैसे तो नीना. इसलिए मैंने तो अपना कैमरा पे अपना इजहार किया है कि मैं आपको डेट पर ले जाना चाहता हूँ, आपके साथ एक ड्रिंक पीना चाहता हूँ. वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अब तुम सेफ महसूस कर रहे हो मेरे कभी कभी किसी को क्रेडिट भी दे दिया करो. अपने लेके आप ही क्रेडिट लेके आप ही भाग जा रहे हो. अरे she is the youngest ना, so she deserves all the credit. Yeah. But I've got your opinion. I think the girls need to DM out there. I know There is she not is a a, beautiful I have yet to come across. Yes, I have been hit on by men for sure. I have been hit on by other people, but I have never yet. So लड़कों वाला स्टोरी बोल दो सर. सबसे इंटरेस्टिंग मे बी कन्फेशन एंड आई डोंट मीन इट इन अ हिलेरियस और डेरोगेटरी. नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता. इन अ फन वे. ये सब चीजें फन में भी मुझे ऐसा कभी थोड़ा मैं शाय हूँ honestly. अरे बाप रे बाप. You know, so for me, I don't take it that well. I had a problem of low self-esteem. Oh. I still have a little bit left, which I tell Masaba also. I had a major problem of low self-esteem. तो उसकी वजह से I went for also CHUs, you know. आगे कंप्लीट करना पड़ेगा. Complete. Fill in the blanks. Oh, Oh, shit. स्कूल का एग्जाम चल रहा है यहाँ पे. Fill in the blanks. That is what it is. Yeah, because I never I had very low self-esteem. वो लो अभी बहुत हाई हो गया मैम. हमारे लिए तो हम लोग अगर बोलते if it makes even 1% of difference मैं खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ आज के इंटरव्यू के बाद. मैं जाके बहुत खुशी का इजहार करूँ. लेकिन आप अपने हस्बैंड को जरूर बताइएगा कि आप मेरे साथ बाहर जा रही हैं. हाँ.
क्योंकि फिर मैं मैं क्यों नहीं बताऊंगी, मेरे को कोई गिल्ट है? हाँ बस ठीक है। This is the takeaway of this interview. I think we too should leave. But you know, I have to know your story as well. What? You're this very beautiful, pretty girl, a successful actress, self-made actress, if I can put all of it together. These are not just very desirable and attractive qualities, but also very inspiring at the same time. I'm sure आपके पास जितने भी आप deny करो कि you don't have people around, there are many who must be circulating around you like bees. Swarming around you like bees. कि I'm not थोड़ा denying, I attention दे agree. दो. Of course, हाँ. My should I better not to deny. Mrunal is an extremely humble person. Yes. I agree. know? So what is the cutest proposal जो शायद आपको मिला and you denied, but at the same time because it was so cute, आपको deny करने में भी थोड़ा बुरा लगा. Cutest? Proposal जो आपको मिला, which you obviously wanted to deny, but deny करने में भी थोड़ा बुरा लगा कि यार इतना प्यारा बंदा इतने प्यारे तरीके से पूछ रहा है यार क्या बोल दूं. There's this guy who asked me, I asked him, what is cooking in your head? He's like, I know what is cooking in your head. So I got very scared because my stomach started churning. But why? No, so She maybe liked him. I really liked him and so did he, but you know how to break the ice. So he suddenly said that, I know what's in your mind. You're probably thinking that probably I should kiss you. And I was like, करो. हाँ ना. and then I was like, okay. But it got very awkward later because we were in a bunch of lot of people, so we just smiled and we bounced. I mean, but later we met. यार बड़ी हिम्मत होती है ऐसे लड़कों, तुम बहुत अच्छी बात है, मेरे से तो नहीं. क्या बात है. उस मोमेंट पे अगर सही लगता है बेटा, राहुल द्रविड़ की तरह डिफेंस नहीं करना है, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर की तरह एकदम फ्रंट फुट छक्का मारना है. नहीं, but कुछ लड़के ये भी बोलते हैं, अरे तुमको छत पे खिड़की पे देखने का बहुत मन हो रहा है. ताकि वो गाना गा सके मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है. ऐसे भी funny है. moments like I don't know. I mean, क्या I पता just फिर यार, respected. it requires a lot of guts to say all Yeah, this to a girl. yeah. But then Especially this when you is, say you're shy. yeah, but then I just feel that अगर कोई तुम्हें खिड़की पर बुलाकर पूछेगा तो उसकी नीयत अच्छी होगी. हाँ, of course. वो खिड़की से क्या ही कर लेगा. वो नहीं, देख ही but सकता वही फिर है. उसने शायद किया नहीं होगा पहले. हाँ, वही. You know, late bloomers. Yeah. Late bloomers. वो भी हो There's no lust. There's only must, and there's just pure love. But I feel there should, even when guys like approach girls, I feel always do it with a lot of dignity. That is Dignity, very, very- of course, and when you realize कि सामने वाले से same attention नहीं आ रहा, you back off. No, also it just be dignified about things. You don't have to be like there's a certain arrogance is not the correct Oh yes, thing. especially to when you ever get denial. use. Yeah, वो तो it बिल्कुल should नहीं होता. always be done in dignity. You should always make sure the girl feels very comfortable and feels secure in your company. Absolutely. You know, but don't. But listen, Mess. as an actor, ma'am, whenever I go even out for a coffee or something, Yeah. that person in his head thinks that I am dating him. So this is a new thing that I've come. If I go out on a coffee date with someone, just to know that person or his. वो मीटिंग होता है, कॉफी मीटिंग होता है, वो I डेट mean, समझ just, लेते हैं why लोग. can't you just like meet somebody? Exactly, that's what I'm saying. right? लोग समझ लेते हैं डेट. But in their head, they're, oh, I went on a date with her. Yeah, we're seeing her now. Next meeting to dekh. So that's like, what the heck? किसी लड़की ने मेरे साथ कॉफी तक नहीं भी पता. सर क्योंकि मैंने आप चाय पीते हैं ना. उन्होंने सर जब बोला कि वो डेट सिर्फ आउटिंग डेट नहीं होता, आपने जिस तरीके से मैम की तरफ देखा, जस्ट टू रीअश्योर कि आपका जो मीटिंग है वो डेट ही है, मीटिंग नहीं है, दैट वाज द स्वीटेस्ट. नहीं, मैं Nice. है ना. डेट लॉक्ड है एकदम 100%. क्या बात है. बट आई थिंक सम रियली लवली स्टोरीज वी कैन कंटिन्यू ऑन एंड ऑन, बट उतना टाइम अनफॉर्चुनेटली है नहीं. बट लेट्स होप कि यू नो लव स्टोरीज 2 becomes double the success in Dhamaka that it was, and we can do something like a success chat as well on the talk show. Surely. Fantastic. Let's look forward to that. Guys, Lust Stories 2 on Netflix, only on Netflix if I have to put it that way. Coming very soon. जरूर देखो. 29th. 29th June. 29 June देखो जाके Netflix पे Lust Stories 2, double the dhamaka, double the entertainment, double the fantastic cast that we had already, and it's gonna be a dhamaka. Please go and watch. फैमिली के साथ देखो, अपने आप देखो, अकेले देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर किसी के साथ भी देखो, बट देखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट्स अ रैप ऑन द बॉलीवुड टॉक शो टुडे ऑन IWMBuzz. This is your host Shubhajit. We'll see you again with another interesting episode very soon. Thank you so much. Last Stories 2.